घर पे भी होता था तो भी जर्मन में निकलती थी मम्मी पापा के साथ बातें। वाह। तो मेरा शुरू से जैसे 9th 10th क्लास में हो जाता है कि इंजीनियरिंग करनी है, Yes. गाड़ियों में शौक है, सबका Yes. शौक है मशीन्स का। इंजीनियरिंग का हब है जर्मनी। Okay, yes. सच Germany is known for that. एक हफ्ता क्लास लगती है जिसमें थ्योरीज होती हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे जर्मन में पढ़ाते हैं हमें। Okay. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। 3 हफ्ते हम बाकी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे मशीन लर्निंग होती है और जितना भी मैकेट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोर्स है हमारा वो सब। And studies, how are you finding? Is it difficult? स्टडी बिट्स प्रिपेयर नहीं करें। Yeah. Yeah, it is not that difficult. Not that. आपके टेस्ट हुए, how did you score in those tests? 1 to 5 की रैंकिंग होती है, अच्छा। 1 being the best. Grading. So I Okay. did score between 1 and 2 Wow, that's in great. most of the subjects. Great. So from day one, you were earning there. Mhm. You're getting a kind of stipend there. Yeah. Okay. What is the? In my engineering field, it is from 1100 to 1500 euros. Okay. For me, it's 1100 in the first year. Okay. And as we go to second, third year, gets an increase of around 100 euros every year. That's great. We don't need any blocked Blocked account. account, We okay. don't need a test days. We don't need अच्छा। 13th year of education also. Okay, great. Exposure you got in India for the Ausbildung? जब हमारा इंटरव्यू हुआ था आलूप्लास्ट के Yes, साथ, yes. तो हमें पता चला कि एक जो प्लांट है उनका इंडिया में भी है, अच्छा, गुजरात okay. में। गुजरात. Okay. तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि अगर तुम चाहते हो तो तुम वहाँ 2 हफ्ते जाके देख सकते हो तुम क्या क्या सीखोगे वो सब। गए थे गुजरात, 2 हफ्ते रुके थे वहाँ पे, इस कंपनी में गए मंडे टू फ्राइडे 2 हफ्ते। Oh, great. But उनके साथ एक exposure मिल गया आपको. Right. The Ausbildung is for vocation training for how long is it there? It is for 3 years. 3 years. So once you complete that, what is the benefit? You will be now employed permanently in that company? You have that proper job in your hand. Okay. So that is permanent, yeah. In But- this same company. Yeah, Allplast, that is okay. from the company. Okay. Also, I've applied for an Aufenthaltstitel, that is a residence permit Yes. that allows us to stay there for 3 years Okay. plus 3 months for seeking a job. Yes. Job search visa. Yes. Once you have finished your Ausbildung, how much will be your salary? Minimum 3,000 euros to Okay. 6,000 euros. Acha, it varies. But I would say if you want to get independent before everybody else, you can start with Ausbildung. So welcome Advik again to Study Feeds. We are really glad to see you again. Yes, now you are doing Ausbildung in Germany. Okay, you went last winter semester there. Last October you went there. So how's the experience? I'm loving my decision. Okay. Also, I flew to Germany in October, 2nd of October. Mm-hmm. And तब से अब तक मुझे 5 महीने हो गए हैं। Okay. And नहीं मैं वहाँ पे परेशान नहीं हुआ था इसलिए वापस नहीं आया हूँ। Okay. बस मैं बहुत ज़्यादा घूम लिया था और थोड़ी खाने You were missing us. Yeah. You wanted to see us. Okay. तो उसके लिए वापस आया। उसके अलावा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। Okay. लोग बहुत अच्छे हैं, जितना रूट कहते हैं लोग उतने हैं नहीं। Okay. खाना मैं कहूँगा थोड़ा सीख के जाना। Okay. वहाँ पे अगर वेजिटेरियन हो तो फिर तो भूल जाओ। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। Great. बहुत चलो. सुंदर जगह है और जो कोर्स भी मेरा बहुत अच्छा है। Okay. कोर्स करेंगे आज। सुंदर जगह. You are staying in Karlsruhe, Right. right? And your Ausbildung यहाँ पे it is known as vocational training. So you are doing Ausbildung in which company? So मेरी Ausbildung है आलूप्लास्ट कंपनी के साथ। Okay. और जो क्लासेस मेरी लगती है वो लगती है KIT के एक मैकेनिकल ब्रांच में Okay. जो है कार्ल्स बेंशूलर। Okay. वो भी कार्ल्सरूहे में ही है। Okay. तो मेरी एक हफ्ता क्लास लगती है जिसमें थ्योरीज होती हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे जर्मन में पढ़ाते हैं हमें। Okay. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। Okay. और जो 3 हफ्ते हम बाकी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे मशीन लर्निंग होती है और जितना भी मैकेट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोर्स है हमारा, कोडिंग सीखनी होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, Yes. वो सारे कंपनी। वो कंपनी में सीखते हो. Okay. So if I've understood right, 3 weeks you go to that company. Right. Okay. वहाँ पे आप पूरा मशीन लर्निंग, प्रैक्टिकल सब कुछ सीखते हो, काम करते हो, right? And 1 week you go to university. वहाँ पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब जर्मन लैंग्वेज में करते हो. हाँ. So वहाँ पे लर्निंग हो रहा है, थ्योरी पार्ट and practical you are doing in the company. Yeah. That's great. So that means in the company you have all German colleagues. Yeah. You're talking to them in German Absolutely. language. Yes. University में German language. Do you face some kind of difficulty there? I will say in my first few weeks it was very difficult. Okay. Although when I was sitting at the airport, Mhm. there was German couple Okay. to be in a comfort zone, to get Yes. to get in touch with them. So I did speak to them in German. Uh-huh. I did converse with them, and it was good. Good. They were complimenting me, and yeah, I felt good. So there your confidence Yeah. started. Yes, Mhm. I can stay in Germany. I can talk in Yeah. Germany. And Okay. after that, those few weeks, it was all very, very casual. Okay. So जब मैं घर पे भी होता था तो भी जर्मन में निकलती थी मम्मी पापा के साथ बातें। Wow. Very nice. Great. अच्छा, tell me one thing. The basic thing जो यहाँ पे सबको रहता है, अभी भी still everybody is having this thing in mind कि हमें bachelor's करना है, हमें डिग्री करनी है, हमें Ausbildung नहीं करना, vocational training. Lot of students still they are not opting for that. So how did you come to this decision that you want to do an Ausbildung and not a bachelor's? Why? Why you chose Ausbildung? So I'll start with that. Not all the courses that you want to pursue Mhm. are available for Ausbildung, Okay. but of course everything is a bachelor's.
But for me, I wanted to earn. That Okay. is the key highlight of Ausbildung. Okay. That you can get paid while you study, and you can manage your own chores and everything, your rent, your stay, your food, Okay. and also travel. Great. You can also save upon that. Great. So from day one, you were earning there. Mhm. You're getting a kind of stipend there. Yeah. Okay. What is the stipend? How much amount? if So you in my give? engineering field, it is from 1100 to 1500 euros. Okay. For me, it's 1100 in the first year. Okay. And as we go to second, third year, it gets an increase of around 100 euros. That's great. So that means you don't need any blocked account because No. you're already earning there. Right. So in one of the requirement was you don't need any. Yeah, we don't need any blocked Blocked account. account, We okay. don't need a test days. We don't need Achha. 13th year of education also. Okay, great. So the basic requirements were you have to clear your 12th there, and you need to know German language. Yeah, you need to do at least B2 German language. Okay. Most of the companies do say B2 is okay, but I would recommend C1. B2 C1, okay. Yeah. And you did till B2 from study fees. Study fees, yes. And you gave test stuff. Test stuff. So you got preparatory classes for test stuff also from study fees. You cleared that exam also. So that is the second requirement. Yes. So first requirement is 12 pass, then your German language, language. and then your application in the Right. Ausbildung. Okay. And any kind of exposure you got in India for the Ausbildung? जब हमारा इंटरव्यू हुआ था अल्ट्रास्ट के Yes, साथ, yes. तो हमें पता चला कि एक जो प्लांट है उनका इंडिया में भी है, अच्छा, गुजरात में। गुजरात. Okay. तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर तुम चाहते हो तो तुम वहाँ 2 हफ्ते जाके देख सकते हो तुम क्या क्या सीखोगे लोग से। हमने कहा क्यों नहीं। फिर हम गए थे गुजरात 2 हफ्ते रुके थे वहाँ पे, इस कंपनी में गए मंडे टू फ्राइडे 2 हफ्ते। Oh, great. It And did then help. It did help. and you liked it. Yeah. 2 हफ्ते तो वहाँ पे भी जर्मन नेटिव्स थे या नहीं, इंडियंस? वहाँ पे इंडियंस थे। इंडियंस थे, बट उनके साथ एक एक्सपोजर मिल गया आपको Right. ना। और वो भी फाइनेंस कंपनी वालों ने किया था या वो फिर खुद नहीं, वो खुद arrange वो किया। खुद अरेंज किया, बट यू गॉट अ गुड एक्सपोजर एंड फिर आपका डिसीजन पक्का हो गया। Right. वहाँ जाकर नाउ यू रियलाइज दैट यू आर डूइंग Ausbildung and not a regular course. Mhm. You are happy Yeah. with your decision. Mhm. What kind of tips you would like to give to students? I would like to add that Ausbildung कोई नीचा नहीं है, बैचलर्स कोई ऊंचा नहीं है। Okay. दोनों सेम इक्विवेलेंट है, तुम्हें दोनों के बाद जॉब्स मिलेंगी। बस I would say if you want to get independent before everybody else, you can start with Ausbildung. Okay. उसके बाद of course आपका मन चेंज किया तो आप बैचलर्स कर सकते हो। Okay, great. There's no harm. Okay, fine. Just coming back, and you did your schooling from which school? I did my schooling from Bahadurgarh. It's Okay. Scholars Global School. Okay, fine. Okay, that's Also, fine. they did offer me a 15-day exchange program, Okay, student exchange program. to Germany. Yeah, So you went to Germany also? I could not. अच्छा, you couldn't. Okay, Yeah. but so why did you think of Germany? मतलब vocational training का भी कैसे पता चला? How did you got this awareness कि वहाँ पे कुछ ऐसा exist करता है? तो मेरा शुरू से जैसे 9th 10th क्लास में हो जाता है कि इंजीनियरिंग करनी है, Yes. फिर गाड़ियों में शौक है, सबका Yes. शौक है मशीन्स का। इंजीनियरिंग का हब है जर्मनी। Okay, yes. It's such a Germany is machines. known for that. Yes, आई true. से कनाडा में भाई ओवर क्राउडिंग हो रखी है, True. और ऑस्ट्रेलिया मुझे थोड़ा दूर लगता है दुनिया से। Yes. तो भाई यूरोप बिल्कुल सेंटर है जर्मनी, आना जाना बहुत आसानी से। That's why you were here. I think in 6 months you came to meet us. Your accommodation and all, you happy? You stayed, rent सब. yeah, paying everything from my own stipend. That's great. Also traveling a lot. Traveling a lot. Yes, in weekends. Weekends also there was a Christmas break. Yes. Around 1.5 weeks. So I did Wow. travel. Okay, Schengen countries. That's Schengen another countries. benefit of going to Right. Germany. You can travel to different Schengen Different countries. countries. अच्छा, tell me one thing. You're already earning. एकदम से strike किया. Are you still allowed to do this part-time jobs and mini jobs when you're doing Ausbildung there? Can you still? Another key highlight, yes. Okay. I can. Okay. Although bachelor's के लिए 20 hours है, Yes. Ausbildung वाले के लिए 10 hours है, अच्छा. but still आपको stipend के ऊपर 10 hours के पैसे मिल रहे हैं, तो I would say that is enough. अच्छा, तो वीक में 10 hours आप काम कर सकते हो, हाँ. कोई कहीं से भी कुछ मिले उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं और है। Saturdays and days में। सैटरडे संडे भी काम कर सकते हो। ओके फाइन। एंड व्हाट आर योर टाइमिंग्स व्हेन यू गो 3 weeks टू दिस कंपनी? टाइमिंग्स क्या होते हैं वहाँ पे? मेरी टाइमिंग्स हैं अभी 7 to 3. 7 AM to 3 7 PM। Right. ओह वाओ, ओके ग्रेट। और मील्स का कैसे करते हो? मील्स मिलती हैं मील्स भी कंपनी मिलते हैं में। कंपनी, वेरी नाइस। ब्रेकफास्ट के लिए सुबह एक बेकरी आती है, वाओ, उसमें वही कुछ 8:30 का टाइम होता है उनका। अच्छा। इसके बाद लंच होता है 12 पे, Great. 45 मिनट्स का लंच होता है। बट यू हैव टू पे ना? You have to buy breakfast मतलब basically, ठीक है, wow, so no cooking and all. And after 3 that means you are free. अगर after 3 आप let's say कोई coaching classes या कहीं job कुछ करना चाहो, you're free for your studies also. Yes, That means after absolutely. 3 you're free. Great. And studies, how are you finding? Is it difficult? स्टडी बेस्ड प्रिपेयर नहीं करेंगे। Yeah, Yeah, it is not that difficult. not that difficult. आपके test हुए, how did you score in those tests?
वहाँ Good. पे स्कोरिंग सिस्टम अलग है. अच्छा. 1 to 5 की रैंकिंग होती है. अच्छा. 1 being the best. Grading. So I did score between 1 and 2 Wow, that's in great. most of the subjects. Great, very nice. So you're already working, you're studying. Acha, tell me one thing. What do you think? Once you complete your Ausbildung is for vocation training for how long is it there? It is for 3 years. 3 years. So once you complete that, once you have a diploma, can I say that? Yeah. That in your hand, what is the benefit? You will be now employed permanently in that company. You have that proper job in your hand. Okay. So that is permanent, yeah. In But- this same company, Yeah, Malplus. that is from the company. Okay. But obviously you can change Okay. as per your likings. After that, you can change your company You also. can change your company, you can change your job, you can Okay. change your field, you can Okay. change everything. And then your visa Okay. will be also converted to proper job visa, right? Because Yeah. that will be proper job. Also, this visa that also I've applied for an Aufenthaltstitel, that is a residence permit Yes. that allows us to stay there for 3 years Okay. plus 18 months for seeking a job. Yes, job search visa. Yes. So that's also Yeah. you can look for a job there. वो भी मिल जाएगा हाँ, yeah. Okay, that's great. And what do you think once you have finished your Ausbildung, how much will be your salary? It will be from minimum 3,000 euros to Okay. 6,000 euros. Acha, it varies. Yeah. That means abhi 1100, 1500, 2000, or finally you can reach to 4000 euros. Yeah. Okay, that's great. So finally we all are studying basically to have a good career. Mhm. And if you get a good job there, so you're very well settled there. Yeah. And how did your family react to it? The family is happy? They love it. They love it? Yeah. Your decision, they वो खुद supported you plan very कर well? रहे हैं जब मेरे 5 साल के बाद PR हो जाएगी तो वो खुद यहाँ पे शिफ्ट Oh my god, PR तक भी सोच लिया permanent residence, that's great. So blue card and all, you know the procedure, you will be looking at. चलो great, all the best. Thank you, thanks for coming. I'm sure अभी थोड़ा time हुआ है, so you have this experience. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका बिल्कुल. It's a different pathway, you know, not a bachelor studies. साथ के साथ you learning, earning, doing everything. I would say जब भी आप ऐसे ओवर स्ट्रेस्ड फील हो, मतलब हो गए नहीं, वहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है. Okay. बर्डन नहीं होने देते वो. पर जब भी हो तो आई वुड से ट्रैवल Travel. वीकेंड्स पे जब भी छुट्टियां मिले, And छुट्टी you're ले earning, so no tension. राइट. Because generally finance का ही बंदा सोचता है कि भैया कि खर्चा है, you know. अच्छा, उसमें भी आपको वो रहता है जैसे हमें बैचलर्स में सेमेस्टर टिकट मिलता है, यू कैन फ्री, तो ये सब रहता है आपके है, पास. सब कुछ. यू आल्सो हैव अ सेमेस्टर टिकट एंड ट्रैवल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है. ग्रेट. तो बेसिकली फिर आपका खर्चा व्हाट यू आर अर्निंग इज गोइंग इन रेंट, फूड, क्लोथिंग, उसी में जा रहा है खर्चा, राइट? चलो दैट्स ग्रेट. अद्वैत, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. मुझे खुद इतनी नॉलेज मिली है, यू नो, बिकॉज Ausbildung वोकेशन ट्रेनिंग काफी सुना हुआ था, एंड आई एम ग्लैड यू टुक अ राइट डिसीजन. विश यू ऑल द बेस्ट. एंजॉय योर जर्नी. गुड लक. Thank you. Thank you.